Okay. Hi guys. This is Sangram Kesri. Is happening. I need to दिया सबको एडमिट करना है. Admit, 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 admit. Okay, waiting to admit, admit. Hi guys, this is Sangram Kesri from JV's IAS. Today I'm here to discuss the first question of our mark program. So shall we start? Anybody can voluntarily tell me. Okay, thank you. So as you are aware, today's question is about the increased frequency in Arabian Sea. Okay, the question is, in the past 2 decades, the duration and frequency of cyclones in the Bay of Bengal has remained relatively stable compared to Arabian Sea. Examine the factors responsible for increase in frequency of cyclones in Arabian Sea. So here, the directive is examine. And I hope that you all are aware the meaning of examine. Okay, so whenever you find this directive as examine, what you have to do is you need to you need to dig deeper into the statement that is being provided to you, in the sense that the examiner is expecting you to provide evidence, to provide some proof with regard to in support of that statement. Okay, so you will begin your answer in the introductory part. You will first write what is a cyclone, and then what are the evidences that are in support of. Guys, let me first discuss about this question, and after that I will address your queries one by one. Okay, so as I was saying, the directive is examine. So here you need to first provide evidence in support of the statement, and then as per the demand of the question, you need to discuss the factors that are responsible for the increased frequency of cyclones in the Arabian Sea. Okay, so we all know that recently, the number of cyclones have increased. On an average, earlier it used to be 5, and the ratio used to be 4:1, in the sense that 4 cyclones would develop in the Bay of Bengal, whereas 1 would be in the Arabian Sea. However, with time, the ratio is increasing in favor of Arabian Sea. So some of the examples to name is cyclone Okji, then cyclone Mekenu, cyclone Taute, okay, and cyclone Bayu, cyclone Nisarga. Okay, so these are the cyclones that have developed in the Arabian Sea. So to show some support in your answer in favor of this statement, you need to mention these, okay, these cyclones firstly. Then comes the next part, that is, what are the factors, okay, what are the factors that leads to this increased frequency of cyclones in Arabian Sea. Okay, so what are the factors? You all are clear that to develop
a cyclonic storm, the first and foremost thing required is the sea surface temperature. Okay, high sea surface temperature, in the sense that a minimum of 26-degree temperature should be there. At the same time, the depth should be 60 meter, so that abundant amount of water is available in the air through evaporation. All right, and the second one is atmospheric instability must be there. Okay, atmospheric instability must be there, and then the location must be near the equator. All right, one more thing we have observed recently, that is, earlier the cyclones that were developed in the Arabian Sea were quite proximate to the Gujarat coast, but these days we can see that it has gone down towards Kerala, okay, and Karnataka. All right, so these are the things you can mention over there. What other factors we can list out here? So the factors we will divide into two. First one is internal factors, the second one would be external factors. Okay, so internal factors, whatever we have discussed right now, is high sea temperature, okay, and high humidity. Third one is atmospheric instability, and the fourth one is its location or its proximity to equator. Okay, so these are the four internal factors, and the external factors would be your incidence of El Nino Modoki. So El Nino Modoki is nothing but your pseudo El Nino, in the sense that this pseudo El Nino will not have any impact on the Bay of Bengal. So that is why it is increasing the cyclonic storms in the Arabian Sea. The cyclonogenesis is happening in the Arabian Sea. Okay. The second reason for this cyclonogenesis in Arabian Sea is your Arctic amplification. As you are aware, global warming, Arctic temperature is rising, and there you could see that there is melting of ice. All right, as a result of which this is leading to increase in temperature in the Arabian Sea. All right, so these two can be listed as external factors, and the earlier four were internal factors. And then, as per the directives, we need to provide some way forward. The way forwards for this could be, the first one is, we can prevent the loss of life only when proper data is available to us. In the sense that if the IMD, which is responsible in India, could provide us accurate data, correct data, prior to the development of this cyclone, then we can prevent the loss of life. First thing. The second thing what we can do is, we can develop disaster resilient infrastructure. Okay, and thirdly, earlier you all must have seen कि पहले क्या होता था कि साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इतना एक्यूरेट हमें मिल नहीं पाती थी, बट दीज डेज, थैंक्स टू द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, हम लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम लोग उसे यूज करके, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग प्रिवेंट करते हैं लाइफ को लॉस होने से बचाने में. ठीक है. एंड सेकेंडली, एक चीज अभी भी बाकी है, वो है प्रॉपर्टी का अभी भी डैमेज होता है बहुत ज्यादा. सो दैट वी कुड प्रिवेंट ओनली व्हेन वी डेवलप डिजास्टर resilient infrastructure. All right, and next is our prevention strategies. We must formulate some strategies and policies that would help us mitigate these things. Yes, any doubt you have? Guys, any doubt on this? सर, हम लोग को क्या ऐसे साइड करना है कि साइक्लोन का नेमिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, लाइक देयर इज अ स्ट्रेटजी ना कि कौन से कंट्री कैसे करेंगे? No.
ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन यू बिगिन योर स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली ऐसा वाले में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन व्हाट साइक्लोन इज. ठीक है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, आपको मालूम है कि क्या क्या फैक्टर्स है. विंड स्पीड क्या है. ठीक है. जैसे कि हम लोग कैटेगराइज करते हैं वेरियस साइक्लोन्स को, है ना. सीवियर साइक्लोनिक हो गया, वेरी सीवियर साइक्लोनिक हो गया, एक्सट्रीमली साइक्लोनिक हो गया. तो वो सारी चीजें आपको विंड स्पीड के साथ लिखना है. जैसे कि रिसेंटली जो भी हमने देखा अभी अभी इन द अरेबियन सी, ओके, द स्पीड वाज समवेयर, यस, द स्पीड वाज समवेयर 118 to 166. एंड दिस, अगर विंड स्पीड इतना होता है तो हमें मालूम है कि इसे हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं. वी पुट इट इन द वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म. ऑलराइट. सो ये विंड स्पीड आपको वहां पे मेंशन करनी है. along with that you need to mention what is the jump in the development of cyclonic storm in the Arabian Sea or in the Bay of Bengal. Here the question is restricting towards the Arabian Sea only. Okay. As a result of which हमें सिर्फ उसी के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन देना है. ठीक है. पहला चीज. देन जब आप एनलिस्ट करोगे द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, ऑल द टाइम यू शुड रिमेंबर कि जो स्टेटमेंट आपको मिली है, ओके, एग्जामिन का मतलब यही होता है कि यू नीड टू फर्स्ट प्रोवाइड सम रीजंस इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ओके. ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका सपोर्ट करो. इन द सेंस यहाँ पे बोला गया है कि इंक्रीज हुई है फ्रीक्वेंसी तो पास्ट 2 decades में. So you need to provide one by one. जैसे कि recently in 2018 we had experienced one cyclone whose name was Mekanu. Although it made landfall in Oman, the second one was Bayu. Okay, the third one was Nisarg. One of the peculiar case of Bayu was, within 2 days it has converted itself into a very severe cyclonic storm. So since 2018, whatever cyclones have been developed in the Arabian Sea, okay, so वो क्या हो रहा है कि very severe cyclonic storm में develop मैंने convert हो रहा है. ठीक है. Hello, am I clear? सर हमें आंसर नहीं मिले तो फिर मतलब कहाँ से देखने क्वेश्चंस को? I'm not getting your point. Could you please repeat it? सर हमें आंसर नहीं मिले हैं. मतलब हम पोर्टल पे जा रहे थे तो उधर कुछ लिखा हुआ था कि एरर आ रही है. ओके ओके ओके. सो आंसर आपको अपलोड हो जाएगा, पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें. एंड सर क्वेश्चन भी नहीं हुआ अपलोड. क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ सर नहीं, एरर दिखा रहा हूँ. एरर दिखा रहा है. ओके, आई विल raise this issue with the technical team. Okay, but this was the question. As you can write the question: in the past 2 decades, the duration and frequency of cyclones in the Bay of Bengal has remained relatively stable compared to Arabian Sea. Examine factors responsible for increase in frequency of cyclones in Arabian Sea. So here आपको सिर्फ वो फैक्टर्स एनलिस्ट करना है that are responsible for the increased frequency of cyclones in the Arabian Sea. ठीक है सर. Hello, sir. Am I audible? Yeah, you're audible clearly. Yeah, so I had a very small request to make. So like Please. I'm just managing a preparation of UPSC along with my job. So I don't Okay. have like much idea around it. So that's why I enrolled in this particular program. So if you Fine. could just give some general ideas. So for example, आज what we discussed is about one question कि हम examine में ऐसे लिखते हैं. So could you Right. just give one like general approach कि examine में हम ये करते हैं ताकि we at least have an idea in mind कि okay next time this is coming तो उस आंसर में वी कैन ग्रास्प अ बिट मोर, ऐसे फर्स्ट टाइम ना लगे. ठीक है ठीक है. For example, you're talking basically asking me about various directives, isn't it? Yeah, right, definitely. Right. So like So instead of just jumping on the first question, so if we could have just some idea around the terms. right. No problem, no problem. Thank you so much. You see, in UPSC, you will find some of the directives called discuss, comment, elaborate, elucidate. Okay. Then comes critically analyze or critically examine. Okay. So whenever, so let us begin with these directives only: examine or critically examine. Okay.
So there is a basic difference between the two. क्या difference है? Examine section, you will have to write in support of the statement, and then as per the demand of the question you have to explain, and then accordingly you will have to conclude. ये आपका examine में होता है. If the directive is critically examined, then again you need to write in support of that particular statement. कोई तो statement देगा ना. For example, know thyself. There was one statement, Socrates ने कहा था know thyself. Okay, and here the directive was critically examined. All right. So here, first of all, you need to provide some evidences. 1, 2, 3, 4. All right. You Yes, need sir. to write your answer in support of it, and then you need to find out where what is the limitation that are involved in that particular statement. Okay, what are the limitations you find? All right, then later on you need to give your way forward, and you need to conclude as per the demand of the question, and as you have to end it in a balanced way. Balanced way in the sense, see, we all are aspiring to get into government service, right? So critically examine जब आपको directive मिलेगा, यहाँ पे government के against ज्यादा नहीं लिखना है, you need to balance it. ठीक है, पॉजिटिव नोट में खत्म करना है, एंड योर आंसर शुड बी सजेस्टिव इन द सेंस दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ द इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो है, हमें हमें सबको मालूम है. ठीक है, लेकिन हम क्या इसे सोल्यूशन दे सकते हैं, वो भी जरूरी है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू नीड टू नो कीप इट इन योर माइंड कि जब भी हमें क्रिटिकल एनालाइज का लिखना है या फिर क्रिटिकली एग्जामिन का आंसर लिखना है, हमेशा ये याद रखें कि don't reject that statement outrightly. Okay, because if somebody has given that statement, कुछ तो सोच समझ के दिया होगा. Try to find the rationale behind it. First enlist the rationale behind the statement that was given by the person, and then find limitations or drawback in that statement. ठीक है, so this is about your critically analyze or critically examine. Is that clear, Surya? Yes, very clear. Thank you so much. Yes. Fine. Then the next one is discuss. If the directive is discuss, then जो भी आपको क्वेश्चन में होगा, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगा उसके ऊपर आपको पूरा डिस्कस करना है, इन द सेंस उसके बारे में आपको लिखना है. देन इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड कमेंट, देन प्रोज कॉन्स, ये सब आपको लिख के फिर कंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, एंड सम फ्यू क्वेश्चंस यू विल गेट कि वो आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर देगा, सजेस्ट सम मेजर्स टू इंप्रूव the challenges and all that, or to tackle the challenges, to improve the situation. जो भी ऐसा आएगा तो आपको उससे क्या करना होगा, आप वे फॉरवर्ड करके आपको कंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, Right. Yes, sir. राइट. और कोई डाउट है? नहीं. That's all. Thank you so much. या एनी अदर डाउट? Okay. Okay, Upinder Kaur, I have evaluated her copy. Okay, her answer. Upinder Kaur, are you there? Okay. Miss Upinder Kaur, you have written a very good introduction, and then directly you have jumped to the factors responsible for increased cyclone, okay, in Arabian Sea. As I said, first of all, you need to provide some data, some reason, okay, in support of the statement. So that thing is missing in you. Please add that. Then while concluding, also write down some way forward, how we can improve our situation. All right.
कोई डाउट है किसी को? और shall I conclude? Ayushi? No, sir, I don't have any doubt. Amog? No doubt, sir. No doubt. Fine. Jagdeep? No doubt, sir. No doubt. Good. So shall I conclude it? Yes, sir. Yes, Please sir. check the chat box once. Sorry? The chat box once. Chat box. Check the chat box. Yeah. Few people haven't got question. I guess it's because of some error is showing, right? So I now we are think- able to answer the question, sir. So Now we are that able was the old chat. Sir, new chat ke hai ki sir, can we mention about the onset of winter monsoon and which leads to longer cyclone season? Okay. Onset of winter monsoon. You can retreating monsoon. Okay. So you can cyclone basically कब होता है? Before monsoon and after monsoon. Okay. So before monsoon, as you have seen Amphan. Okay. Last time you have seen Amphan in the Bay of Bengal, and retreating monsoon मतलब October November के time पे होती है. You can mention, definitely you can mention. Okay, but those are the instances that happen in Bay of Bengal. But here we are talking about Arabian Sea. Okay, so we have to restrict ourselves to the question only. यहाँ पे you can see very clearly that it has two parts. The first one is you need to address the statement क्या है वो, and second one is in the sense that कि Arabian Sea में number of cyclones की जो frequency है वो increase हुई है, ये भी बताना है हमें. और दूसरा चीज हमें ये दिखाना है कि क्या क्या फैक्टर्स है. ये बे ऑफ बंगाल के बारे में पूछ नहीं रहा. जब विंटर मानसून की बात तो नहीं है, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून लिख सकते थे उसे आप. ठीक है. सो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे यू विल सी दैट साइक्लोनोजेनेसिस होती है इन द बे ऑफ बंगाल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी चेन्नई में बारिश होती है काफी ज्यादा. इनफैक्ट स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, they all get impacted because of these monsoons. ठीक है. And in 2013 there was one cyclone during this retreating monsoon, that was cyclone Phelan. Okay, बहुत ही devastating cyclone था वो. Okay, so it was also very very severe cyclonic storm. ठीक है. लेकिन that is कहाँ पे है वो? बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में नहीं है. और कोई क्वेश्चन है? Excuse me, sir. Yeah. Can you just check the chat? I just sent a message. Yeah. Amit Rohan, AR. Just a minute. Actually, मैंने देखा नहीं था. I'm so sorry. Okay. Okay. So I you- joined it at 9:93 approximately that time. Actually वेटिंग रूम पे जितने उस टाइम पे थे मैंने सबको एडमिट कर दिया था. अच्छा. So Okay, so sir. from next time onwards I'll be very Yeah, sure, careful. sir. Okay. So try to be in time. Yeah, sure. Right. I just had some other commitments, so I just rushed. 2 minutes late हो गया था, sir. कोई बात नहीं, कोई कल बात नहीं. से no problem. I'll be there prompt by 5 minutes before the session starts. Fine. No issues. Okay. वैसे आप मुझे पूछ सकते हो. If you have any question, then I can explain. Sir, I don't have a question. I actually sent you the answer. I was just looking for a brief evaluation. Maybe how is it?
Yes, yes, you will get the feedback as soon as possible. Let me know those who have missed out. In fact, there are two more people who are in waiting room. So before I, conclude this session, I'll let me repeat for 2 to 3 minutes more. Okay. So what I'm saying is that what is the demand of the question? So you all have the question. Let me repeat it. The question is, in the past 2 decades, the duration and frequency of cyclones in the Bay of Bengal has remained relatively stable compared to Arabian Sea. Examine the factors responsible for increase in frequency of cyclones in the Arabian Sea. So here the directive was examine. Okay. So examine in the sense you will be provided with one statement. First of all, you will have to provide some data or some reason, some evidence in support of that statement, right? Then you one by one you will enlist it, then you will address the second. So जब भी आप mains answer लिखोगे, all of you should remember, try to identify the subparts that are involved. So here there are two things. The first thing is you need to, yes, provide evidence. The second one is you need to write factors responsible. Factors responsible में हर किसी को मालूम है कि cyclonogenesis कैसे होता है. The first and foremost condition for development of cyclone is high sea surface temperature, and we all know that it is minimum of 26 degrees Celsius sea surface temperature is required. First thing. The second thing is that if cyclone is developing, okay, for it to develop there must be a limit, a depth of water 60 meter ye hona chahiye, so that abundant amount of water is available. Okay. And abundant amount of water available hoga, temperature already high hai, to kya hoga, it will lead to evaporation. ठीक है. So evaporation होगा, फिर क्या होगा, तो atmosphere में instability होगी, isn't it? This could be the third reason. And the fourth reason for the high sea surface temperature could be proximity to equator. And the fifth one is global warming. So it's all because of climate change and global warming. क्या हो रहा है, SST बढ़ रही है. As a result of which क्या हो रहा है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन की वो भी इंक्रीज हो रही है. Clear? So these are to support it, you have to give some instances. क्या क्या instances है? First instance कि आपने देखा मेकानू है which made landfall in Oman in 2018. All right. The second one was Bayu in 2019. The third one was Nisarga in 2020. All right. So one by one आप इसका डेटा देके जाओगे, उसको फैक्टर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंड थिंग यू नीड टू शो हियर इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट जनरली जब भी अरेबियन सी में कोई भी साइक्लोन ओरिजिनेट होता था, वो लैंडफॉल कहाँ करती थी, गुजरात में करती थी. बट दीज डेज वी सी that landfall is occurring, or these cyclones are impacting southern states as well. So recently हमने केरला के केस में देखा, कर्नाटका के केस में देखा, राइट. सो ये भी एक रीजन है. ठीक है. सो ये उसके बाद आपको फैक्टर्स दिखाना है एक एक करके, फिर आपको वे फॉरवर्ड बतानी है. ठीक है. वे फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम. Okay, if we have proper early warning system, and in India IMD is responsible to issue early warning system. If we have a proper channel and proper system, then क्या होगा, we can prevent loss of life as well as property. Although with experience हम लोगों ने देखा कि loss of life को हमने काफी हद तक डिक्रीज कर दिया है. ठीक है. लेकिन प्रॉपर्टी आज भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल few 2 to 3 years ago there was something called cyclone Amphan and cyclone Yas. Okay, so कितना डैमेजिंग था वो, कितना ज्यादा प्रॉपर्टी इसने डैमेज करी थी. ओके. सो हमें तो लाइव्स को हम सेव कर रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम. एट द सेम टाइम वी आर अनेबल टू सेव लाइव्स. ठीक है. नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए आपको, डिजास्टर साइक्लोन रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए. ठीक है. सो ये एक एक करके आप इंप्रूव करना है.
Excuse me, sir. One small question, if you don't mind. Now another Uh, person is joining. Yeah, tell me, इतना लेट अगर आएंगे तो मैं कैसे ये करूंगा? Okay. सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, काइंडली. हाँ, आपने बोला एग्जामिन के लिए यू नीड टू गिव एन एविडेंस, राइट? राइट. So is it only for examine या फिर all the keywords? It's नहीं only नहीं for नहीं. examine, right? It's only for examine. I guess I have Okay, got it. explained about the directives Yeah. that are given in a question. ठीक है. Examine में आपको ऐसा करना है. There is something called critically examine. उसको भी आपने देखा होगा. In हाँ, case of critically examine, आपको in support of the statement तो देना ही है. ठीक है. At the same time, you need to find out the drawbacks in the statement. अब जिन्होंने भी वो Okay. statement दिया, ठीक है, क्या क्या चीजें मिस आउट कर गए, ठीक है, वो भी मेंशन करना है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकली एग्जामिन एंड एग्जामिन. आई सी आपको कहाँ पे डाउट है? यस. यस ऑफ कोर्स. कोई डाउट है किसी को प्लीज, अदरवाइज वैसे भी 10 मिनट्स में ये एंड होने वाली है सेशन. And those who are in waiting room right now, sorry, I cannot admit them at this moment. कल से आप प्लीज 9 बजे तक आ जाइए, ठीक है. 9 to 9:15 or 9:30, whatsoever it is, we will have a discussion on daily mark questions. ठीक है. Yeah. एक्चुअली आई एम इन IGS बैच, तो हम लोग की इको की जो क्लास है इकोनॉमिक्स की वो 9 बजे से होती है, तो वो भी 9 बजे होती है. यस सर, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, मैं ये मैसेज जतिन सर को पहुंचा दूंगा. नो प्रॉब्लम. वो अल्टरनेट डे होती है, लाइक मंडे देन ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, तो ऐसे तो कल तो सैटरडे है, कल तो नहीं होना है फिर भी. ठीक है, कोई बात नहीं. जो भी आपका मैसेज है, आई विल कन्वे इट टू जतिन सर एंड दे विल टेक द डिसीजन. ठीक है. सो जैसा भी होगा करा जाएगा. यस. और किसी को कुछ कहना है? सर या प्लीज. सर जैसे क्वेश्चन की ये डिमांड है कि हमें अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल से कंपैरेटिवली ज्यादा क्यों है, इसके पॉइंट्स रखने, राइट? राइट सर. तो जैसे जो इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग और प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर कॉमन है. लाइक ग्लोबल वार्मिंग साइड, लेकिन इक्वेटर की प्रॉक्सिमिटी में ही है, तो उसके अगर हम एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन करेंगे? वैसे अर्लियर क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुआ करती थी. नॉट ओनली इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हुआ करती थी. ओके. बट दीज डेज ऑल ऑफ ए सडन बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो राइट साइड में आपका सी सरफेस टेम्परेचर यूज्ड टू बी हायर एज कंपेयर टू अरेबियन सी. ठीक है. सो दिस वाज द रीजन. और हमें मिनिमम 26 या फिर उससे एबव ही चाहिए. तो 26 से एबव मतलब 27 के एबव ही मान के चलो, तभी जाके आपका साइक्लोन होगा. ठीक है. सो ये एक रीजन है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर अब आजकल अरेबियन सी में भी हो रही है. ओके. Yeah. और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? 5 मिनट्स है. Word limit for answers. Okay. Has it not been mentioned? Mr. Hasmi?
यहाँ पे वर्ड लिमिट मेंशन नहीं था क्या क्वेश्चन में? एनीवन प्लीज प्लीज इसको बता दो. ओके फाइन फाइन. मैं बता दूंगा टेक्निकल टीम को, आगे से वर्ड लिमिट भी मेंशन कर दे एंड अकॉर्डिंगली आप सब इसको सबमिट करें. और कोई क्वेरीज? Okay, then it's better that we conclude this session. Okay. So tomorrow you will get another set of question and कल को फिर दोबारा discussion होगा. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, sir. So